Yo, guys, this is Mani once again. Rise and shine. Good morning, Eid Mubarak, and welcome to the channel. After a long time, I I'm I'm making a video. So anyway, video start करते हैं. It's gonna be an exciting day. Challenge to buy a car from Scotland from an auction and drive it back to Birmingham 300 mile. Or iski exciting part of the journey is like I'm going alone. None of my mate is with me. It's gonna be very exciting day. Be a travel plus an auction vlog. ऑक्शन प्रोसेस जो है उसको हम आज डिस्कस नहीं करेंगे. ऑक्शन प्रोसेस को वो कैसे वर्क करता है, उसमें क्या होता है, क्या अप्स एंड डाउन्स हैं, विच थिंग्स यू नीड टू नो, उसको हम डिस्कस करेंगे लेटर इन अनदर वीडियो. हमने जर्नी मैंने इस तरह से प्लान किया इन ऑर्डर टू सेव द टाइम एंड टू गो द ट्रांजेक्शन स्मूथ. मैंने I'm gonna take a flight from Birmingham airport to Edinburgh. And then वहाँ से हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे. We'll reach the auction and we'll show you guys the car and the stuff, and then हम couple of hours spend करेंगे in Edinburgh, and will be fun. We'll enjoy a lot, so stay tuned. आज ही start पकड़ लिया हमने. My ride is here. FK is here, active, early morning, and almost late हो रहा है. I hope I'm not gonna miss my flight. Yes, bro. Assalamu alaikum, Mani bhai. Walaikum salam, bro. Kaise? Yeah, good, bro. Not too bad, bro. Let's get cracking, man. Yeah. Don't want to get late for Get Scooty. going. Yeah. I think we are late, bro. I will be It's fine, going. inshallah. I hope. Sure. यार एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे लग रहा है मैं लेट हो गया हूँ और मेरी फ्लाइट है 8:45. ऑलमोस्ट 7:50 हो चुके हैं. बट द गुड थिंग इज़ मेरी बोर्डिंग हो चुकी हुई है. हम एक्चुअली निकले ही लेट थे और फिर थोड़ा ट्रैफिक मिला हमें रास्ते में. होपफुली आई एम नॉट गोना मिस माय फ्लाइट. So we made it. Alhamdulillah, we made it. Going to the tunnel. Yeah, that's perfect. I need to find out either the tram is the best way to get to the destination or either I have to take the bus. So अभी उसका पता चलाते हैं कि हमें कौन सी which thing is convenient for me. Tram का स्टेशन वो सामने है. There is the tram, here is the bus. अभी ज़रा मैं गूगल पे चेक करता हूँ which thing is better for us. So okay.
आई फाइंड आउट मुझे 3 बसें चेंज करनी पड़ेंगी. सो आई एम हेडिंग टू द बस स्टॉप. हमारा बस आ रही है 10 AM पे. एंड just let's find out the bus. There you go to the people in the queue. अभी हम पहुँचे हैं जी पार्क एंड राइड. मेरा सेटअप क्या रहा है, मुझे वहाँ पे जाना है सीधा. और हाँ जी, तो भाई साहब हम ऑक्शन में पहुँच आए हैं. लकीली बेसिकली आई मिस माई बॉस, सो आई हैव टू बुक द ऊबर. सो कुछ डिसएडवांटेज हुआ है, कुछ एडवांटेज हुआ है. थोड़ी सी कॉस्ट ऊपर चली गई हमारी, लेकिन एट द सेम टाइम लाइक आई मेड इट 1 hour अर्लियर. और मुझे सिस्टम ने अलाउ किया कि मैंने अपॉइंटमेंट अपनी मार्क कर दी है. एंड आई एम जस्ट दे टोल्ड मी टू पुट द हाईवेज ऑन and I'm just waiting here. Look, they're bringing the cars. So soon ours is gonna arrive here. I hope everything is fine with the car. And फिर next plan करते हैं क्या करना है. Copart is one of the largest auction inside the UK for the accident cars. Mostly the cars come through the insurance claims. Okay, there she comes. Let's find out what's going on with the car. Look at there, mate. Check the car, guys, and hopefully it will make it back to Birmingham. Still there is lot to do in Edinburgh, as I came here first time to Scotland. First expression is not really, no, wasn't really good. Like you can see, I'm not very happy. But चलो देखते हैं, इंशाल्लाह बेहतर होगा. Hopefully when we'll get to the Birmingham, car will be already sold. So stay tuned. हाँ जी भाई लोग, वापसी हो रही है हमारी. इट्स अ लॉन्ग ड्राइव. अभी फर्स्ट स्टॉप किया, सर्विसेज पे रुके हैं टू स्ट्रेच द लेग्स. कोई कॉफ़ी शॉफ़ी लेते हैं, कोई स्नैक्स लेते हैं, यहाँ से थोड़ा फ्रेश होते हैं. एंड देन विल हेड बैक. सो 6 अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 250 माइल रह गया वापसी का. एंड मिलते हैं इंशाल्लाह बर्मिंघम में. फिर स्टे ट्यून्ड. Second break.